Hello everyone, good afternoon. Welcome back you all here in Desipan with Creative Corner. And today we are going to continue our bird mesh bottle session part 2. So part 1 also is there available in the page and YouTube. You can just follow to complete workshop. Here is our bottle which we did in last session. Join fast guys. I hope I am clearly audible and visible to you all. And one more important information I have to share with you all. Just a minute, let me inform in the group, then we will start the session. Hi, Prachi ma'am. Hello. So first of all, let me share with you all the exciting part that we are going to resume our folk art sessions, okay, which we have started last year, and we have done almost 36 to 38 art forms last year, okay. And this time we are going to resume the session again. Yes, my dear, I am in India right now and super hot is there.
Yeah, what happened with this? Let me fix it. Done. Yes, Delhi is like a hot ball. है ना? We are sitting inside the hot ball. Okay. See, we are going to do our session, folk art session. Okay. And last year we did all these art forms, Indian art forms. Okay. So this time I'm going to resume the session again from the first art form to whatever we have done till now. I will repeat it again for all those participants who are joining this time, okay, who are joining first time. So all this will be the repeated sessions, and along with these we will do continue our new Indian art forms as well. Okay, हम ये तो करेंगे ही करेंगे और साथ में नए आर्ट फॉर्म्स भी करेंगे. एंड ऑल दोज आर्ट फॉर्म्स व्हेन यू गेट द फ्लायर, all the details will be mentioned on that this is art form number 1, and this art form we are going to do where the venue, the date, material and everything will be defined on that particular flyer. So keep your eye on the group, okay, especially the messages of the admin. Okay, you will get all the information one by one, all the information about the workshops. Okay, and on that numbers of the workshop will also be mentioned, like 1 2 3 4 kind of, because in between that we are going to do some new art form as well, and on that the number will be mentioned onwards. Okay, like 30, which we have already done 30 or 8 or 39, I think. So after that, the next new art form will start with the number 40. Okay, so on that already mentioned. Thank you, Rekha ma'am. Thank you. I'm in Delhi, Rekha ma'am. How do you eager to create? Okay, thank you, Yogi ma'am. Yogita ma'am, just keep ready your material and what say I can say that just get ready with all the art material and with full enthusiasm to fly in the art forms. विश्वास जी, हिंदी में बता रही हूं मैं कि आपको ये आर्ट फॉर्म्स बिल्कुल फ्री सेशंस होंगे. ओके, ये आर्ट फॉर्म का सेशन हम लास्ट ईयर ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने ऑलमोस्ट 38 to 39 आर्ट फॉर्म्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं. बट जो इस टाइम नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए आई विल प्रोवाइड अगेन those videos and sessions we will do. ठीक है, मतलब हम फिर से वो करने वाले हैं जो हमने किया था, और ये इसके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे टाइम बाय टाइम, और इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी. तो आपको एडमिन्स के मैसेज को प्रॉपरली देखना है और उसको फॉलो अप करना है. ठीक है, और जो नए आर्ट फॉर्म हम करेंगे वो भी हम इनके साथ साथ नए आर्ट फॉर्म्स भी रखेंगे इस सेशन में, क्योंकि पहले हम ये कर चुके हैं तो इनको तो करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ साथ नए आर्ट फॉर्म हम बीच बीच में करेंगे. सपोज कि लाइक हमने 2 सेशंस हमारे पुराने आर्ट फॉर्म के करे, तो हम एक नया भी करेंगे बीच में, और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्कशॉप्स भी चलती रहेंगी. जैसे हमने बॉटल पेंटिंग कर रही या कुछ भी करा तो बीच बीच में, जिससे कि लोगों को टाइम मिल जाए अपने आर्ट फॉर्म्स को कंप्लीटली थॉरोली इंजॉय, मतलब अच्छे से बनाने के लिए, है ना. तो हम
जल्दी जल्दी भी नहीं करेंगे क्योंकि हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिन्होंने कर लिया है उनको थोड़ा बोरिंग ना हो उनके लिए, इसके लिए हम नए आर्ट फॉर्म्स बीच बीच में करेंगे कि लाइक सपोज 2 आर्ट फॉर्म ने ये करे, फिर एक नया कर लिया, फिर कुछ और कर लिया, फिर हमने अपने इसमें से एक आर्ट फॉर्म उठा लिया, फिर नया आर्ट फॉर्म ले लिया। तो ऐसे करके ये सेशंस आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने पहले बनाया है उनको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो आपने लास्ट टाइम बनाया था, उसकी ही पिक्चर्स आप शेयर कर दीजिएगा जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, जिससे, और जब मैं बोलूंगी तभी प्लीज डो नॉट पोर योर ऑल आर्ट वर्क एट अ टाइम इन अ ग्रुप। जब मैं इन्फॉर्म करूंगी कि नाउ इट्स टाइम टू सबमिशन, तो आपको, जिन्होंने पुराने जो कर चुके हैं पार्टिसिपेंट, वो वापस से अपने पुराने ही जो आर्ट फॉर्म में मैंने कराए थे वो पिक्चर्स आप शेयर करेंगे ग्रुप में, ठीक है। जिससे कि जो नए पार्टिसिपेंट हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा काम करने के लिए, और उनको मतलब बोलेंगे ना, एनकरेज भी होंगे कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उन्हें पता भी चलेगा। चलो, हो गई हमारी आर्ट फॉर्म की डिटेल। अब प्लीज काइंडली शेयर दिस सेशन विद एवरीवन, और लोगों के साथ भी ये मेरा सेशन और ये शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लें, ठीक है ना। Kindly share these sessions with your friends and family and even your other WhatsApp or Facebook group and Instagram group so that people can join and enjoy the art form and they at least get to know about the heritage of India, है ना। ये हमारे क्या है, इंडियन हेरिटेज है और बहुत ही सुंदर है। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले और जाने कि क्या क्या चीजें हैं, इतने आर्ट फॉर्म्स हैं हमारे इंडिया में कि दैट्स व्हाई वी इट सेड दैट इंडिया इज लाइक कल्चरल, है ना, कल्चरल हेरिटेज। इंडिया के पास बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज और ये सब चीजें जो है ना, इससे वी शुड प्राउड ऑन दैट, और लोगों को पता चले। हम लास्ट ईयर मैंने किया था, हु इज दिस, ज्योति मैम, यस, बहुत लोगों ने किया था, है ना। तो जो नए लोग आए हैं उनको भी दिखाना है ना आपका काम। मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी। और यस, फॉर वन मोर इन्फॉर्मेशन, कि जो नए लोग आए हैं आप अपना भी काम शेयर करिए, और पुराने जिन्होंने करा है उनका वर्क आप मेरे पेज पर दे सकते हैं। मैंने उनका जो है अपने पेज पे भी डिस्प्ले किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपके काम को भी लोग देखेंगे कि आप कैसा काम कर रहे हो, है ना। और दिस इज नॉट लाइक अ कंपटीशन, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। आपको जैसा बना सकते हैं वैसा बनाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा अच्छा नहीं बना तो मैं शेयर नहीं करूं या कुछ भी। डोंट वरी, बिगिनर्स कैन ज्वाइन, और हम बहुत बिगिनर से ही आप एडवांस चलोगे, है ना। तो इसलिए डोंट हेजिटेट टू शेयर योर वर्क, कभी भी ये नहीं करना है। और मैं सबका वर्क शेयर करती हूँ, मैं कोई भी सिलेक्टिव और सिलेक्टेड डिसीजन नहीं होता है कि इसका काम ज्यादा अच्छा है तो मुझे वो शेयर करना है। आई शेयर, यूज टू शेयर एवरी वर्क, ईच एंड एवरी वर्क इन फेसबुक एंड ऑल्सो, है ना, उनको टैग भी करती हूँ। तो इसलिए डोंट वरी, आपके काम को डेफिनेटली आई विल पब्लिश ईच एंड एवरी आर्ट वर्क। और जो पुराने पार्टिसिपेंट है दे कैन आंसर योर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वेरी वेल, कि उनका काम मैंने शेयर किया हुआ है। तो ऐसा कभी नहीं होता, जो भी मुझे शेयर करते हैं मैं उनका काम डेफिनेटली पेज पे शेयर करती हूँ। चलो आज आते हैं हमारे बॉटल आर्ट के सेशन पर। तो दिस बॉटल वी हैव डन इन अवर लास्ट सेशन। जिन्होंने मिस कर दिया है, यू कैन वॉच दिस सेशन ऑन यूट्यूब चैनल। ओके, यूट्यूब इज ऑल्सो विद द सेम नेम, देसीपन विद क्रिएटिव कॉर्नर, सेम नेम से ही है यूट्यूब चैनल पर भी। हमारा जो चैनल है, जो हमारा पेज है, उसका चैनल सेम ही है। तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इसको, इसका सेशन, या हमारे फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल होगा अभी। बट यूट्यूब में आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगा, आपको ढूंढना भी नहीं बहुत पड़ेगा, आप उसमें चेक कर लेना, ठीक है। जिन्होंने मिस किया हुआ है ये सेशन, आज हम इसका कलरिंग पार्ट करने वाले हैं। इसका बेसिक जो वर्क है वी हैव ऑलरेडी डन। यस ज्योति मैम, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। बहुत टाइम से रिज्यूम करने के लिए सोच रही थी बट टाइम ही नहीं मिल रहा था बीच में। यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है, कलर्स भी सूखे जा रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है ऐसे कलर्स भी खराब हो जाएंगे।
बॉटल ओपन करते ही कलर्स के हाल खराब हो जाते हैं। Okay, so these parts we will do with the golden color. One coat I already have done. Okay, so एक कोट हम कर चुके हैं, आपको दोबारा से मतलब गोल्डन कलर का एटलीस्ट 2 या 3 कोट करना ही पड़ेगा। देन आफ्टर दैट गोल्डन विल बी विजिबल प्रोमिनेंटली, है ना, अच्छे से तभी दिखेगा जब आप गोल्डन कलर का 2 या 3 कोट करेंगे। And in this workshops, language will be no barrier. You can ask me in Hindi, in English, even in French as well. So I can reply. But इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती प्लीज मुझे। So English और हिंदी I think sufficient to work with. क्या कब से स्टार्ट होगी मैम, ज्योति मैम? 1 जून से शुरू हो रहा है ना हमारा आर्ट वाला, इंडियन आर्ट फॉर्म्स। ओके, 1 जून। Okay, so all these curves, whatever we have made here, ornamented design, you have to color with golden shade. And let me color one part so that I can at least show you the look of this bottle. Then after I will color this bird one. Okay, ये पहले कलर कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बर्ड्स भी कलर करके दिखाऊंगी एंड विद लाइटिंग इफेक्ट एवरीथिंग। अभी 2 मिनट दीजिए मुझे, इसको फटाफट मैं गोल्डन कंप्लीट करके आपको बर्ड कलर करूंगी और फिर लाइट के साथ आपको दिखाऊंगी कि लाइट में कैसा आएगा।
ओके सो गोल्डन इज डन हेयर, रेस्ट वी यू कैन डू बाय योरसेल्फ, है ना, आराम से कर लेना इसको, बाकी मैं भी करूंगी। मैंने वन कोट किया हुआ है गोल्डन इधर। नाउ गोइंग टू कलर दिस बर्ड पोर्शन एंड देन आफ्टर द साइड फ्लावर्स। Okay, so here is done with golden. Now let's do bird portion. Bird you can do with the red and blue. Okay, so here I'm taking white color again, doing lower side. ओके, लोअर बॉडी नीचे की इधर बर्ड के साइड में मैं वाइट कलर किया है मैंने इस पे। ओके, ओके डन। एंड now you can do gold, pink color, red color, blue shade, whatever color of bird you want, you can just do. Okay, like here I am doing with the pink shade. And then after we will blend it. Okay, wash your brush, wipe your brush, and then slowly blend with white. Okay, like this.
Okay, like this you have to give the shading. Then our legs and beak will be burnt sienna. Okay, पैर में और उसके बीक में, बर्ड की चोंच में हम करेंगे burnt sienna. Okay. Done. And here we have flowers. So flower also you can do with any color of your choice. Here I'm doing with maroon color. Okay, like pink I already done on the bird, so I'm selecting here the maroon shade. To color the roses. Even you can color with different shades also, red, or you can take pink also. Okay. Hello Sudeshna ma'am, hi. But I will do different color. Like this one I did with pink, another I will do with purple or blue. Okay, like that. All the birds I will be making different shades. When you just keep the bottle, then you can just turn it around and to get a different look with different shade, है ना. जब बॉटल घुमाएंगे तो कहीं भी रखेंगे ना, तो उसको डिफरेंट कलर की बॉटल्स में बर्ड्स का एक अलग ही लुक आ जाएगा एवरी टाइम जब आप बॉटल को रोल करोगे. Then here we have done with maroon. Good afternoon, Meena ma'am. Good afternoon. Today I came live in afternoon because I evening is packed with another sessions. Okay, now what you have to do, just you can, if you want to give shading, take white shade. Okay, and the tip of your brush and just apply at the center like this. Okay, and then roll your brush.
So center will be light and the okay. So you can see the flowers here. डिजाइन कैसे बनाया, इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा पार्ट 1 का. ओके सुजाता मैम, पार्ट 1 वीडियो यू हैव टू सी. और वो वीडियो कहाँ मिलेगा, जल्दी बताओ आप लोग. जल्दी बोलो कहाँ मिलेगा वो वीडियो. Eyes here with black. Okay, and then let color one more bird and then after I will show you the final picture. Till then this will also get dry. तब तक bird का ये भी dry हो जाएगा. पर मैं इसको ऐसे रखूं कैसे, नहीं रख पाऊंगी. वेट, इसको ही ड्राई करना पड़ेगा. आँख ज़्यादा बड़ी हो गई मुझे लग रहा है, थोड़ा सा उसको सही करना होगा बाद में. यूट्यूब. ओके and now okay, so let me show you the look of this bottle. Okay, here you can see this is your bottle complete. You have to complete all this with golden shade. I have done only the lower side. Okay, and here we have light. ओए मैं उल्टा लगा रही हूँ, वेट. ओए okay, and then okay, and then see the look of this bottle. I will share final when I complete this one. Okay, and here you can see the look of this bottle. If you want, you can add fairy light inside the bottle also, or like this you can make your bottle lamp. Okay,
You can change the light, white, yellow, and warm. This is warm yellow light. And here is your bottle. When we color it completely, then it will be beautiful. I will share video as well after completion. You can keep it white as well, है ना? White भी अच्छा लग रहा है ऐसे. White with white light. See, it's look like pure ivory color. So you can keep it white as well. White भी अच्छा लगेगा. Or otherwise, like here I have golden. So you can go with golden. Golden is looking beautiful in yellow light. Yes, like this. Because it is giving more golden look. है ना? Go more golden hue on this one. Okay, so to complete your bottle and share with me. So this is it. I'm gonna to wind up this session. I will complete this one and then after share with you all. Okay, even I will share the first part of the video link as well to in WhatsApp group. Okay, to join WhatsApp group, kindly message me on my WhatsApp number, that is 9818768292. Let me tag the number as well here. Okay, bye everyone. Take care. To join new workshops and everything, just message me on my number. I have tagged it here. Okay, I pin that number. You can just message me. Bye everyone. Take care.